Assalamualaikum dear students. Today about to lecture chemistry O level what are ions and types of ions. इसमें हम पढ़ेंगे कि what are ions and types of ions. कि ions क्या हैं और उनकी types कितनी हैं, उनकी अक़साम कितनी हैं. तो चलते हैं. ions. ion की डिफाइन है स्पीसी इसका मीन्स होता है स्पीसी मीन्स पार्टिकल ऑफ एटम ग्रुप्स ऑफ atoms. Specie particles of atoms, groups of atoms carry. ये कैरी किसको करेंगे? कैरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge is called ions. कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं जो कैरी करें पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को. अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं. There are 2 types. There are 2 types of ions. फर्स्ट इसकी क्या होगी? टाइप्स. फर्स्ट टाइप होगी कटायंस. और सेकंड इसकी क्या होगी टाइप्स? एनायंस. इसकी ये 2 टाइप्स हैं. अब मैं इसको आगे डिस्क्राइब करता हूं. यहां में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट क्या होगी? कैटायंस. सेकंड हमारे पास क्या होगी? कैटायंस क्या है? फर्स्ट 2 टाइप्स हैं कैटायंस एंड एनायंस. कैटायंस की क्या डिफाइन होगी? anion which have a positive charge, anion which have a positive charge, that is called anion
which have a positive charge on it, that is called cations. Cations are formed, आयंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटायंस है। कैटायंस आर फॉर्म, कैटायंस जो है वो किसको बनाते हैं, किसको तशकील देते हैं? कैटायंस आर फॉर्म लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ईजी इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, etc. Cations and ion which have a positive charge on it, what is called cations? Cations are formed losing of electrons, e.g. sodium, potassium, etc. लेट्स इसकी टू टाइप्स पे चलते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप्स है उसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी सेकंड फॉर्म टाइप्स क्या है? एन आयंस, एन आयंस, एन ion which have a negative charge, negative charge on it is called an ion, an ions. Anions are formed are negative anions are are formed, किसको ये बनाते हैं, किसको तशकील देते हैं? gaining of electrons, e.g. chlorine, oxygen, nitrogen, etc. Anions which have a negative charge on it is called anions. Anions are formed gaining of electron, e.g. chlorine, oxygen, nitrogen, etc. ये क्या करते हैं कि एनायंस में क्या होगा, ये गेन हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो कैटायंस होते हैं वो लूजिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।